थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर and rises by ₹50 for each subsequent meter. It is similar to the first sum as we have done in the first part. इसमें सेम है, वहाँ पर टैक्सी फेयर था, यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल मेंशन किया गया है, राइट? तो सिमिलर मेथड से करना है. फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट आपके पास दी हुई है एंड जो एडिशनल चार्जेस आ रहे हैं फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर्स दैट इज ₹50. इट इज ऑल्सो मैंशन. So you will follow the same methodology and you can say that the given situation is in AP, right? So let us do the last sum of the first part. The amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. We have given the principal, first question, and the fourth part is we have given the principal, that is ₹10,000, and the rate percent is also mentioned, that is 8% per annum, compounded annually. It is given to us. अब टाइम जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग केसेस राइजेस कर लेते हैं. अमाउंट का जो फॉर्मूला है आप लोग करके आए हो 8th क्लास में, दैट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर n. P stands for principal and R stands for rate of interest and N stands for time, right? First case arises, case 1, जब हम time कितना ले रहे हैं, when N is equals to 1, time is 1 year. So amount is 10,000 into 1 plus rate is 8 upon 100 raised to power 1. Okay. Now case 2 arises when you take n is equals to 2. Then amount will become 10,000 1 plus 8 upon 100 raised to power 2. Okay. Now case 3, in similar manner, n is equals to 3. So amount will become, let it be A1, A2 and A3 so that it will be more clear to you. Clear? 10,000 into 1 plus 8 upon 100 raised to power 3. Clear? We got the amount in each case. Now our task is to find out whether it is an AP or not. Okay? So these are the amounts we got from the 3 cases, that is A1, A2 and A3. Okay, now our task is to judge whether it forms an AP or not. So to find the difference between the first two, we will get A2 minus A1. Okay, so 10,000 1 plus 8 upon 100 raised to power 2 minus 10,000 1 plus 8 upon 100. ओके, 1000 भी कॉमन आ रहा है, दोनों में है, सो लेट इट टेक इट एज अ कॉमन टर्म. 1 प्लस 8 अपॉन 100, यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर ये 1 टाइम आ रहा है, तो एक टाइम तो कॉमन ले ही सकते हैं. कॉमन आ रहा है इसमें 1 प्लस 8 अपॉन 100. सो हियर वी हैव 2, इसकी पावर 2 है, एक टाइम वो निकल चुका है बाहर, स्टिल इट हैज़ 1 टाइम ना. सो 1 प्लस 8 अपॉन 100, और इसमें से ये 10,000 भी बाहर जा चुका है, 1 प्लस 8 अपॉन 100 भी बाहर चुका है, तो आ चुका है, कुछ भी नहीं बचा. सो वी विल राइट इट एज -1. ओके, ये 1 और -1 कट गया, एंड वी हैव 10,000. By taking its LCM, we will get 108 upon 100 multiplied by 8 upon 100, right? कटिंग हो जाएगी इसकी, and we get 864, right? This is the difference between the two amounts. Okay, similarly we will find the amount from the second and third case, that means A3 minus A2. So 10,000 1 plus 8 upon 100
raised to power 3 minus 10,000, 1 plus 8 upon 100 raised to power 2. Okay, and 10,000 as a take common term. Similarly, 1 plus 8 upon 100 raised to power 2 will become common. यहाँ से आपके पास बच जाएगा 1 plus 8 upon 100 minus 1, क्योंकि सारा ही हमने बाहर निकाल लिया है. तो -1 and +1 will be cancel out and we left with 10,000 multiplied by 108 upon 100 स्क्वायर है इसका. सो 2 times मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, multiplied by 8 upon 100. So we can cut it like that. ठीक है, and here we multiply the terms and we'll get 93,312 upon 100, and that will give you 933.12 rupees. Okay, so you can clearly see that the difference between the two amounts are not equal to each other. Clear? So that is why the given situation is not as an equal, right?